development of management thought. So here, what we are reflecting at is like, uh, as a company, there has to be a management thought process. Like uh, a company, when it comes into entity, when it comes into being, it has to reflect into like how do we start? What are the principles? What are the disciplines? Like, how should we work? Okay, whether it should be just a manufacturing unit, प्रोडक्ट जैसे बनाने हैं वैसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, दूसरा कैसे रहता है तो वो सोचते हैं कि हम कौन से डिपार्टमेंट्स की तरह से काम कर सकते हैं। तो अगर हमने वो बातचीत कर ली हो, मतलब अगर माइंडफुली बातचीत कर ली हो ना, तो तीन चार लोगों को लेके, जैसे हम बंदों को लेके कंपनी बनाते हैं, तो उनके साथ सोच विचार करके कितनी बड़ी कंपनी होनी चाहिए, तो वो कंपनी किसके ऊपर से होगी, तो हम लोग का फाइनेंशियल कंसर्न कितना है, कंट्रीब्यूशन कितना कर सकते हैं, काम किस चीज का है, तो उस तरीके से। ओके, सो दिस इज ऑल इज ओके फाइन, it is in a practical applicability, but how the things fall in procedure, how things fall in place, like वो कुछ काम कर सकते हैं या कुछ सोच सकते हैं, तो उसको हम एक मैनेजमेंट थॉट प्रोसेस बोलते हैं। बिकॉज हर वक्त वाकया कैसा रहता है कि शुरुआत की कंपनीज का लेंगे, जब पुराने जमाने में कामकाज होता था, तो ओनर जो था वो मैनेजमेंट था और बाकी सब जो था वो लेबर फोर्स था। तो दे यूज टू जस्ट वर्क अंडर द ओनर, so that was their entrepreneurship concern. But slowly and slowly, how it became that companies became bigger and bigger. So it was very difficult for the owner to reflect on the worker, because what started happening was like they were indulging in more and more of mistakes. They were more and more of damages. They were more and more of wastages. They didn't know how to resourcefully recycle the goods. There was a lot of bureaucracy, mishandling, and corruption, like manhandling. सो ह्यूमन थॉट प्रोसेस जो था वो नहीं था, बिहेवियर का अप्रोच था वो नहीं था। तो गुड गोइंग, लाइक हाउ इट केम इनटू बीइंग दैट ही स्टार्टेड डिस्ट्रीब्यूटिंग द वर्क। So distributing the work, where it happened first, it was with the labor. So labor got a bit distributed. So labor became a bit more relaxed. But when the thought process came, like, how do I get going with so many people? Kind of, he said, okay, fine, we will have different managers. Okay, so this is like every manager has got a control point, and there they will have different executioners, they will have different workers and laborers working under them. तो ये सब बातचीत भी हो गई, लेकिन फिर से ध्यान में क्या बातचीत आती है, तो उन सब हेड्स को रिलेट करने के लिए कुछ तो भी अच्छा प्रोसीजर होना चाहिए। सो दैट दे कॉल इट एज मैनेजमेंट थॉट प्रोसेस। Administration is already existing, which keeps it under control, which keeps it well managed. Okay, so management came as a thought process, like they could do something better, they could think in continuity, in so from where it started, like we could pick up like one of the finest contributors to the management. It is the person Cortelia's contribution. Okay, so he has prepared three good management like concepts. So first is the Arthashastra, Chanakya Niti, and Chanakya Sutra. If you get to read the book, you will definitely go through it. Kindly see if there are anywhere in the libraries, or you could just refer it into the bookstores. So here, see, it is neatly defined how you can take it into the like thinking process, how you say the king is the leader, the minister is the manager. So it's like it's all a royal process. So how royal process is into being in today's management theory in the concerns. Okay, so how it follows neatly into place. So this would give you a good relation. Now let's take like what is the scientific management. These are few of the classical theories. So like I'll just put up what Taylor actually thought about scientific management. So here he has picked it up as a science. What's science? Science is nothing but it is more of a concept as things happen like this. Things do not happen like this. They are more of logical thinking. There's nothing illogical about anything. Like you get a bit more specific about it. So there are like how products are produced. They are all visible things. They are all physical entities. So this is how. Okay. So this is a science. Then he also has a frame of mind where he is saying that people there are as a concern, and there has to be harmony and cooperation amongst them. They are actually into harmony with each other, and there is no discord. There is no fight like that. Okay. And
for a company to be working, there has to be an aspect of like development of each and every person. हर एक बंदा जो है काम कर रहा है, और उसका कैसे तरीका है, उसका तरीका ऐसा है कि सबको अपना अपना कुछ तो भी मिल रहा है. So he is like not this way that he is part of a concern and not getting anything. Okay, तो ओनर भी पार्ट ऑफ द कंसर्न है, उसको भी कुछ मिल रहा है, वर्कर्स भी पार्ट ऑफ द कंसर्न है, उनको भी कुछ तो भी मिल रहा है, और वहां पर हार्मनी है. इट्स अ लाइक what type of concern? A peaceful concern. So the what is the cast on the firm? It is a peaceful concern. Okay, it's a theoretical aspect, the way Taylor's is thinking. Now here various techniques of scientific management have been picked up. Now how these theorists actually go ahead and put up the theories, so they have to be in the working atmosphere. वो लोग काम करते हैं, बातचीत करते हैं, वर्कर्स से बातचीत करते हैं, और लेबरर्स से बातें करते हैं, अपने ओनर्स से बातचीत करते हैं. तो कुछ उनके एक्सपेरिमेंट्स हैं, वो जैसे कैसे उन्होंने वर्कशॉप पे काम किया, तो उन्होंने पोजीशंस ऑब्जर्व की, उन्होंने कुछ कुछ काम जो है वो ऑब्जर्व किए, और उनकी बातचीत के तरीके से दे सॉ दैट दिस इज द फ्लो. लाइक दीज आर द एस्पेक्ट्स, दीज आर ऑफ द रूटीन वर्क, एंड दीज आर हाउ दे आर बीइंग जज्ड. तो प्लानिंग में देखा उन्होंने, तो प्लानिंग इंचार्ज कौन, वहां पर कौन कौन था, कौन सा प्रोसेस फ्लो था. तो रूट क्लर्क है, वहां पर इंस्ट्रक्शन क्लर्क है, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क है, डिसिप्लिनरियन है. फिर वैसे ही प्रोडक्शन में कैसे लोग हैं, तो स्पीड बॉस है, इंस्पेक्टर है, मेंटेनेंस फोरमैन है, गैंग बॉस है. सो दिस इज हाउ ही पिक्ड अप लाइक दिस शुड बी द जॉब प्रोफाइल्स, दिस शुड बी आइसोलेटेड. नहीं तो क्या है, चार वर्कर्स हैं और उनका काम ही आइसोलेटेड नहीं होता, और वो क्या करते हैं, तो ऐसे हो सकता है कि खुद का काम तो हुआ ही नहीं, दूसरों का काम कर लिया, और एक काम जो है फिनिश ही नहीं हुआ, इस तरह से. तो उसमें क्या होता है कि यू लूज ऑन द टाइम. जो काम चाहिए होता है वो होता नहीं है, जिसकी अपेक्षा होती है वो नहीं होता. तो उसके लिए उन्होंने ऐसे डिवीजन ऑफ लेबर कर दिया. तो उन्होंने स्टार्ट कहाँ से किया साइंटिफिक मैनेजमेंट के थिंकिंग का, तो वो उन्होंने शॉप फ्लोर से शुरुआत की. तो फंक्शनल फोरमैनशिप, फोरमैन इज अ वेरी गुड पोजीशन, मींस इन द वर्कर्स इट इज थॉट ऑफ एज एन गुड पोजीशन. तो वहां पर वर्क स्टडी उन्होंने की. तो वहां पर उन्होंने वर्क को स्टैंडर्डाइज किया, उसको सिंप्लीफाई किया, जैसे हम उसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर. यू आर आइडेंटिफाइड विद ईच जॉब, और यू आर आइडेंटिफाइड फॉर अ ग्रुप ऑफ जॉब. So this is how. So this is like giving the job a more standard procedure, and it is simplifying the job from the workman. तो हर वक्त उन्होंने वर्कमैन को क्या जस्टिफाई करने का सोचा कि आपका ये जो काम है वो जस्टिफाइड है, लेकिन वो स्पेसिफिक होना चाहिए. सो यू शुड नॉट ओवरलैप ऑन अदर्स जॉब. और स्क्रूटिनी कैसे रहेगा, तो आप खुद का जॉब जो है अपने तरीके से करोगे, और ज्यादा ओवर टाइम का अगर बात हुई तो फिर उसका कुछ भी पहचान अलग से होगी, उस तरह से. तो वर्क स्टडी मॉडल है. फिर उस पे उन्होंने एक और अच्छा काम कैसे किया, तो पीस वेज सिस्टम है. पीस वेज का जो सिस्टम है वो वर्कर्स के तौर तरीके के लिए भी है और मैनेजमेंट के लिए भी है. तो यहाँ पर कंपनी काम जैसे ले लेती है आपसे, तो उसका पैसा कैसे दे. तो कम नहीं होना चाहिए, काम के तौर तरीके के हिसाब से पैसा आपको मिलना चाहिए, न कम न ज्यादा. तो जितना आपने प्रोड्यूस किया है, तो वर्कर के लिए तो बहुत अच्छा हो गया. अभी मैनेजमेंट को कैसे देंगे, तो मैनेजमेंट को दे सके ऑफर यू सैलरीज. So funda is for a job profile, this is the salary that would be offered. So it's an aspect of like identifying it you with the wages, what salaries need to be paid. Sometimes even managers are given salaries according to the work they do. So for every job they are finishing in the day, like it's an accounting job or it's an execution job, coordination job, you are allocated some money. Or for some examples, like for education, when you are into teaching, hourly payment is there for it's a management job. So it's nowhere in the labor job profile. So this is also, it's the execution, it's the task execution which you are doing. So this is the thing which they have picked up. Okay, so scientific management, for every input there is an output. It has to be rewarded with your salary. It has to be rewarded with a wage. अभी मेंटल रेवोल्यूशंस क्यों बोलते हैं, तो सी थिंग्स आर लाइक व्हेन द ओनर हैज कम इनटू मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, उन्होंने कुछ प्रोडक्शन की बातचीत की है. तो शुरुआत के जो काम थे वो सब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ही होते थे. ओके, तो अब उसमें कैसे टाटा ले लो, नहीं तो अपना महिंद्रा ले लो, दे आर
बिग कंपनीज जिन्होंने शुरुआत बहुत पहले की तरह के हैं, तो उनके प्रोसेस जो है वो रिवॉल्व हुए, इवॉल्व हुए, ओके। एंड दिस रिवॉल्यूशन हैज बीन अराउंड द थिंकिंग, मतलब आपका ब्रेन वेव था, तो वो थियरिस्ट्स ने उसके बारे में ज्यादा सोचा फिर धीरे धीरे। पहले बातचीत के तौर तरीका जो था वो आप कितना प्रोड्यूस कर रहे हो उस पर था, पर धीरे धीरे उनका जो थ्योरी का जो पहनावा था वो उनका जो ब्रेन वेव था वो लोग, मतलब वर्कर्स की स्टडी पर ज्यादा गया। उनका काम का तौर का तरीका कैसा है, वो कैसे सोचते हैं, उनके काम के तौर तरीके, मतलब अभी प्रोडक्शन से थोड़ा सा हट के हाउ टू इवॉल्व ऑन द टाइम लिमिट्स, मतलब अगर कुछ लिमिटेशन दिया हो, अगर प्रोडक्शन जो है 10 दिन का करना है, ठीक है, बराबर है, लेकिन उन्होंने बोला वही प्रोडक्शन आपको 5 दिन में करना है, तो आप कैसे करेंगे? सो इस तरह से, तो वहां पर उन्होंने उसका फ्रैंक एंड गिलियन है, उन्होंने मोशन स्टडी किया, फटीग स्टडी किया, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच इज वन ऑफ द थियरीज। तो बातचीत कैसे कर रहे हैं, व्हाट इज द थियरी दे आर प्रोपाउंडिंग इज लाइक टाइम एंड मोशन स्टडी, इन दिस मच टाइम दिस मच कैन बी डन, व्हाट इज द मूवमेंट, लाइक हाउ मच steps it takes to move from one unit to another, in the sense the production quadrant। वैसे ही फटीग स्टडी, उनको कितना थकान होती है दिन भर के काम में, अगर हमने उनको ज्यादा तो नहीं परेशान कर रहे, तो उस एक की जगह पे दो लोगों की जरूरत है, उस तरह से। और ह्यूमनिस्टिक अप्रोच जो है, मतलब बराबर है, फटीग स्टडी का अगर हम सोच रहे हैं तो उसमें कुछ बात तो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ये है, हम उनको एक की जगह पर दो का काम दे देते हैं, दैट इज एन ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, लाइक वी आर थिंकिंग अबाउट देम, सो दिस इज हाउ। तो देन इन लाइक हेनरी गैंट, हाउ दे हैव थॉट ऑफ इज, वहां पर जो काम कर रहे हैं उसके हिसाब से अभी बोनस सिस्टम दो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस दो, तो उस तरह से दे शोन सम कंसर्न। So why we have given development of Gantt chart, critical path method, yeah, program evaluation, review thinking. So he propounded that this should be inserted as a uh, process in the uh, work। तो वहां पर वो क्या बता रहे हैं, तो आप हर एक चीज का एक किताबी तौर तरीका रखो, मतलब जहां पर आप जो काम कर रहे हैं, ज्यादा का नहीं, रोज का बेसिक वर्क जो इन्वॉल्वमेंट है वो आप कितने दिन में खत्म करेंगे, उसका टाइम इन्वॉल्वमेंट कितना है, उसका मॉनेटरी एसोसिएशन कितना है, वो सब आप उसमें प्लीज दीजिए। तो ये दोनों प्रोसीजर्स जो हैं वो गैंट चार्ट्स करके बोलते हैं, और उसको एक एस्पेक्ट जो है क्रिटिकल पाथ मेथड है, और दूसरा जो है पर्ट है, PERT। सो दिस हेल्प्स यू टू प्रिपेयर द like what you have done, the task, and it is like it is for others to evaluate. Like when you are as an worker, give it to your higher profile, that is your manager, that this is the task being done। तो वो जज से वो चार्जशीट पढ़ के डिसीजन दे सकता है, या उसको फर्दर उसके हायर अथॉरिटी को दे सकता है कि ये काम हो गया है, तो ही कैन वर्क आउट, लाइक ही कैन वर्क आउट द डिटेल्स कि ठीक है आज इतना काम हो गया, इतना काम जो है बच गया, इतना पैसा खर्च हो गया, इतना पैसा जो है बन गया, उस तरह से। तो काम जो है एक हफ्ते भर में खत्म हो जाएगा, 4 दिन में और रॉ मटेरियल आ जाएगा, तो उस तरह से तो हर एक डिपार्टमेंट को ये एस्पेक्ट जो है करने को देते हैं, तो उससे जो डिसीजन मेकिंग है, जजमेंट जो है थोड़ा सा और इजियर हो जाता है। तो इस तरह से ये चीजें जो है इवॉल्व हुई हैं। So these have basically made the things more easier. Like how these theories have interfered with the working, they have interfered with the working by observing these people जो काम कर रहे हैं, और उनको थोड़ा सा आप इस तरह से अपने को अपग्रेड कर सकते हैं, इस तरीके से आप अपना फिनिश जो है ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। इस तरह से ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है इंट्रोड्यूस किए गए। तो इन लोगों ने, ये जो थियोरिस्ट हैं, ये दे हैव इवॉल्व विद द वर्किंग्स ऑफ द environment and they have given them good way of working। It is basically a facilitation procedure। So when it is asked in a exam, like what are the classical theories, you should group out these few. If they tell you that what are the neoclassical theories, so you have to put up the few others which we will be discussing further। Fine, this is how। अभी साइंटिफिक मैनेजमेंट का एक जो तरीका है वो हमने अभी बातचीत की, लेकिन काफी कुछ चीजें ऐसी होती हैं, हर एक चीज के लिए प्रोज और कॉन्स होते हैं, कुछ सही होता है और कुछ गलत होता है। तो क्रिटिकल एनालिसिस किया उन्होंने कि वेदर इट इज फॉल्टी और इट इज गुड इनफ फॉर अस। सो कुछ चीजें जो होती है हमारे तौर तरीके में फिट बैठ गई, और कुछ कुछ जो थी हमको चाहिए कि
नहीं, इसमें कुछ तो भी नया होना चाहिए, अगर इस तरह से किया ज्यादा तो ज्यादा अच्छा होगा। तो ये यहाँ पर 4 पॉइंट्स जो है दिए हुए हैं। तो हर एक चीज को प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है वो नहीं मिला। ओके, सो लाइक व्हाट दे आर सेइंग इज, जैसे मैंने बातचीत करते वक्त बताया कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए ही है, सिर्फ इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ही है। अगर हम कंसल्टेंट हैं, एक्चुअली मैनेजमेंट फर्म है, तो वहां पर ये हम नहीं कर सकते। या तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग फर्म है, तो वहां पर हम आउटपुट कैसे करेंगे? सिर्फ सब कुछ जो है सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए तो हम यहाँ पर जज ही नहीं कर सकते, क्योंकि सब वर्कर्स के लिए बताया गया है। ठीक है, फिर यहाँ पर मोर स्ट्रेस ऑन फिजियोलॉजिकल वेरिएबल्स अफेक्टिंग द ह्यूमन बिहेवियर एट वर्क प्लेस। तो जैसे हमने कैसे बात किया उसमें कि वर्कर्स को ह्यूमनिस्टिक अप्रोच दो, जैसे टाइम मोशन स्टडी है, न तो उनका जो फटीग स्टडी है। तो आप सब कुछ वर्कर्स के लिए बातचीत करें। पहले कैसे था, ब्यूरोक्रेसी था और बुर्जुआ टाइप ऑफ सिस्टम बहुत था, पूरा का पूरा पैसा जो है, ज्यादातर पैसा जो है वो ओनर्स को चला जाता था, और वर्कर्स यूज टू गेट लॉट, मतलब lot of the like what has been thrown away, thrown to them ऐसे। तो it was most of it like very meager। ठीक है, तो उस तरह से उन्होंने बोला कि नहीं, आप बहुत ज्यादा वर्कर्स के लिए बातचीत कर रहे हो, हमारे लिए ज्यादा बातचीत करो जो उनके लिए प्रपोज करते हैं। तो ऐसे फिर यहाँ पर साइंटिफिक मैनेजमेंट इज मोर रेलेवेंट टू मैकेनाइजेशन एंड ऑटोमेशन टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ एफिशिएंसी दैन द ब्रॉडर एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सब चीजें कैसे हैं? फिर भाई साइंटिफिक मैनेजमेंट है, मैंने जैसे बोला इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, तो हियर यू आर थिंकिंग मोर इन टर्म्स ऑफ मैकेनाइजेशन, हाउ द प्रोडक्शन टू बी डन। तो दे आर टॉकिंग अबाउट ऑटोमेटिंग द इंडस्ट्री। ओके, तो अब फिर वर्कर की जगह नहीं बच जाती। वर्कर्स लोगों का हर वक्त क्या दोष रहता है कि अगर ऑटोमेशन हो गया, सभी कुछ टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हो गया, तो मेरे लिए तो जगह ही नहीं रह जाती। तो इस तरह से ये सब चीजें जो है ट्रबल करती हैं, एंड यू हैव टू फाइंड अ गुड बैलेंस। हर चीज जो है नाप तोल से इंप्लीमेंट करनी पड़ती है कि क्या चीज हम लेंगे और क्या चीज नहीं करेंगे। फिर से पीस पीस जो वेज सिस्टम है वो 40 प्रपोजिशन हो जाता है। लाइक वर्कर्स दे कैन वर्क इट आउट वेरी वेल, बट व्हाट अबाउट द management, what about the industrialists? They cannot live on piece wage, they need to get a major chunk. So this is how, so this thought process has got pros and cons. So what to be implemented is best to the owner's choice. Now later to this, Fayol came in and he set up the management, okay, theory. So here he is talking more on the managerial qualities and the training, okay, and he put up some general principles of management. So first and foremost, like what are the various principles of management that he would be thinking about? So what should be the qualities, like if a manager is there, what sort of qualities he should have? So there, like his job description, his work entitlement, what would be his hierarchy, like what should be his span of control, एंड व्हाट शुड बी द बेसिकली ट्रेनिंग, उसको क्या क्या ट्रेनिंग होना चाहिए। तो इस तरह से, और मेजर एस्पेक्ट जो था उसने बताया तो वो डिवीजन ऑफ वर्क है। डिवीजन ऑफ वर्क कैसा है, तो हर एक डिपार्टमेंट जो है इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है, तो वो फंक्शन कैसे करता है अपने अपने इंस्टीट्यूशन की तरह से। तो उसका डिवीजन ऑफ वर्क कैसे रहेगा, जैसे हम डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में बातचीत करते हैं, वैसे डिवीजन ऑफ वर्क के बारे में। तो उसको अथॉरिटी कितना दिया जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे चेक साइनिंग का कितना है, और फिर कितने लोग अपने अंतर्गत रख सकता है, कितने बातचीत कर सकता है, कितने डिसीजन ले सकता है। फिर उसके बारे में उसका कमांड में कितना, मतलब यूनिटी ऑफ कमांड इन द सेंस, यूनिटी ऑफ कमांड इज जस्ट टेलिंग द स्पैन ऑफ कंट्रोल। 4-5 लोग हैं या 10 लोग हैं, 12 लोग हैं उसके अंतर्गत काम करेंगे, फिर उनकी हिरार्की क्या होगी कि हाउ देम आर डायरेक्टली अंडर कंट्रोल और अदरवाइज दे आर इनडायरेक्टली अंडर कंट्रोल। तो उस तरह से, तो ये सब जो है उसके डिवीजन ऑफ वर्क है। फाइन, एंड वेदर हाउ डज द इंटरेस्ट फ्लो, लाइक इंडिविजुअल इंटरेस्ट कितना रहेगा और जनरल इंटरेस्ट कितना रहेगा। आप जब बातचीत करते हो तो सब ग्रुप से बातचीत करोगे, एक थॉट प्रोसेस रहेगा कि सबको अपना अपना तौर तरीका दिया जाएगा। तो ये डिवीजन ऑफ वर्क में बातचीत करते हैं हम लोग। ठीक है, अभी ये देखिए कितनी बातचीत उन्होंने की है। मोस्ट ऑफ द थ्रस्ट वाज ऑन द टीम वर्क। लाइक टीम वर्क में कैसे हम बोलते हैं एस्पिरिट द कॉप्स, इट इज इफेक्टिव टीम। ओके, सो दे आर लाइक वर्किंग ऑन द team management. So how authoritative the team should be. So here easier going is like you are generating more initiative for the group of people, trying to manage the equity,
Then like more of order is being created for the profile. Okay, so here also he spoke about the remuneration of employees, and he spoke about the centralization and decentralization. So what does the matter of fact for the remuneration of employees here, kind of like what should be offered? So here it is not now piece weight system, it is being generated as a salaried employee. Okay, so carefully analyzing the job profile, like what are the tasks under it, then how much should be offered, and then how much they could give. So this is the way the remuneration of employee has been generated. Then centralization and decentralization is the um, directions, in the sense how will you carry out your decision making. तो कुछ कुछ कंपनी में कैसे रहता है, वो सेंट्रली ऑर्गेनाइज रहते हैं, एक गवर्नमेंट ऑफिसेस होते हैं, या तो ब्यूरोक्रेटिक ऑफिसेस होते हैं, या सेमी प्राइवेट ऑफिसेस, दे डू नॉट ओपन मच टू द outside, like, and there then the chief, the boss, he is actually giving all the directions. So for every paperwork and every decision, they have to go to the center. They have to go to the chief and then get their decisions taken. If it is different, like decentralized, to decentralized body mein kaise rahega, there would be lot many heads, and under various heads there would be various other people, like there would be managers, there would be execution officers, and like every center head is able to take their independent decisions. So this happens in a decentralized sort of a process. It happens in franchises, it happens in various companies also, like they are into uh, marketing of a product. So they open up their regional offices, they offer area sales offices. So kind of they are able to function in their independent way. And so these are the different ways. So this has been offered by the thinking process has been offered by our good person Fayol. Okay. So now what's the scalar chain? Now, scalar chain, what is it? It's a scalar linear chain. It's a scalar chain. It's a thinking process. Like how will you order your function as? Like this could be with reference to your employees. This could be your references with the number of departments. This could be with reference to your offices. So it's mere existence of the various divisions. So this is all. And yes, equity is what? Equity is the aspect of what needs to be uh, here, like how the employee would function. This is equity order. Everything is related to the employee. So nowhere the scientific management is actually telling about company as a whole, but it is more of it in on employees purpose. Okay, that is how. So here now we have to get more reflective on like how Taylor and Fayol, they are different from each other. Again, this is like a question which could be asked, like differentiate between the theories of Taylor and the theories of the Fayol. So here we have put up a few of the ideas, like how they have both actually reflected on the managerial problem. This is what, like how should be a managerial thought process, and how it should be followed more systematically. Okay, then how some of their principles can be applied to solving a managerial problem, and how like effectively, that is, effectively is a good word and kind of needs to be referred to all the time whenever you're saying that it's a management thought and management action is there. Okay, so this is how. So these are few of the things where you could just relate and put it up that these were the similarities. So now let's check out where are the differences. So what Taylor said and what Fayol said, they differ in these few things. Like what are the aspects? It is the perspective. Like हम लोग किस चीज की तरफ या किसी इंसान की तरफ, तो हम कैसे देखते हैं, किसी कॉन्सेप्ट की तरफ किस नजरिए से देखते हैं, तो उसको हम पर्सपेक्टिव बोलते हैं. तो टेलर का जो अंदाज था वो देखने का, वो शॉप फ्लोर को था. और फेयोल कहाँ दिखता था, तो मैनेजमेंट के तौर तरीके पर. फोकस जो है, लाइक व्हाट इज द फोकस पॉइंट? फोकस इज योर एक्चुअली the task which you are going to do. Always they say that please focus on what you want to do. आपको जो गोल अचीव करना है वहां पर ध्यान दें. टारगेट टारगेट ऐसे बातचीत करते हैं. तो वो टेलर के यहाँ पर कैसे है, तो सिंप्लीफिकेशन है, स्टैंडर्डाइजेशन के ऊपर वो ज्यादा बता रहा है, बातचीत कर रहा है. तो शॉप फ्लोर में टास्क जो है वो सिंप्लीफाई करने चाहिए, उसको तोड़ के करिए काम को, और
हर एक काम को, टास्क को, और उसको स्टैंडर्डाइज करके करिए कि ये जो इन्वॉल्वमेंट है, ये जो काम करना है, तरीका है, वो इसी तरह से होना चाहिए। क्योंकि वर्कर की स्टडी कैसे, हम जैसे अलग अलग तरह के कॉलेजेस हैं, अलग अलग तरह की पढ़ाई है, तो कोई चीज बनाने का अंदाज भी अलग अलग तरीके से हो सकता है। तो हियर इफ ही सेज प्रपोजेस, सर ये ऐसे काम करिए, तो नो, बॉस बोलेगा ये मैंने बताया, ये आप ऐसे ही करेंगे, यहाँ पर कोई नया काम जो है हो नहीं सकता। सो दिस इज हाउ, सो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द जॉब। तो अभी फेयर कैसे बात करेंगे, वो प्रिंसिपल्स के बारे में बातचीत करेंगे, मैनेजमेंट एज प्रिंसिपल्स, ठीक है। ओरिएंटेशन कहाँ पर है, तो उनका टेलर का ओरिएंटेशन जो प्रोडक्शन और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट था, फेयर का जो था वो मैनेजरियल फंक्शंस में था थोड़ा सा, जो उनको टास्क कराते हैं, तो दे आर मियर मैनेजर्स। अभी रिजल्ट ओरिएंटेशन कहाँ पर है, तो रिजल्ट ओरिएंटेशन जो है साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट है। मतलब हर काम जो है हम साइंटिफिकली कर रहे हैं, ओके, साइंस के अंतर्गत कर रहे हैं, उसकी तरह से, मतलब हमारे पास कुछ तो भी साइंटिफिक स्टेप्स हैं, तो उसके ऑब्जर्वेशन से हम कर रहे हैं, और उसको मेजर करके कर रहे हैं, नाप तोल से। मतलब 4 मिलीलीटर की चीज लेनी है, 4 मिली, हर एक एक मतलब कंपोनेंट लिया, तो उसमें 4 मिलीलीटर ये पड़ेगा, 4 लीटर ये पड़ेगा, उसके हिसाब से तो चीज बन रही है। अभी फ्यूल में क्या चीज है, उसका तौर तरीका हम उसको मेजर कर नहीं सकते। कोई भी चीज जो है, जैसे ऑब्जेक्टिव्स हैं, गोल्स हैं, हम बातचीत करते हैं टू अचीव सो एंड सो, तो उसको कैसे करेंगे, फ्यूल को पर्सनल एक्सपीरियंसेस बात करते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बात। यू कैन एंडलेसली कीप ऑन टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, देयर इज नो डर्ट टू दैट, देयर इज नो डर्ट टू एक्सप्लेनेशंस। हर एक चीज जो है वो ज्यादा है और खत्म ही नहीं हो सकती अगर हम बातचीत का तौर तरीके का लिखेंगे। तो वो एक थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है फ्यूल के इस तरफ में, ठीक है। और ओवरऑल कॉन्ट्रीब्यूशंस की जो हम बातचीत करते हैं, तो हर एक चीज जो है टेलर के यहाँ पर प्रोडक्शन लाइन पे मिलती है, और फ्यूल की जो है वो सिस्टमैटिक थियोरी है मैनेजमेंट के तरीके, ठीक है। तो अभी यहाँ इसी थियोरी में एक ब्यूरोक्रेसी थियोरी है। ओके, ब्यूरोक्रेसी हैज बीन पुट अप बाय मैक्स वेबर। व्हाट इज ब्यूरोक्रेसी? ब्यूरोक्रेसी इज ऑल डंडा पार्टी, लाइक देयर इज अ अपर होल्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड दे डोंट अलाउ अदर पीपल टू थिंक मच। ज्यादा उनको सोचने ही नहीं देते, काम भी जो है वो ऐसे टेंशन के एटमॉस्फेयर में होता है, वो थोड़ा सा ट्रेडिशनल तौर तरीका है, मतलब वेरी ओल्ड सिस्टम ऑफ फंक्शनिंग, एंड इट हैपेंस इन मेनी कंपनी स्टिल। तो गवर्नमेंट जो है, जैसे बोलते हैं ना, इट्स अ ब्यूरोक्रेसी, रेड टेपिज्म वगैरह, तो काफी चीजें जो है बाहर को पता नहीं लगती। यहाँ का जो तौर तरीका है वो क्लोज्ड सिस्टम है, बंद इन्वायरमेंट। ओके, सो बहुत लोग टटोलने की कोशिश करते हैं पर नहीं समझ में आता। तो व्हाट इज दिस सिस्टम, इट्स बट थॉट दैट इट इज अ charismatic system under one sorry, again slip of tongue, under one ruler. And there is this a bit of rationality, like there is a flow from one, like topmost hierarchy to the last most. Okay, so there is a bit of, like, lots of legalities are there, but this still exists. And here these are few of the disciplines under the bureaucracy, like what are the various aspects of a bureaucracy type of organization. Governmental organizations do have this sort of a like power or the sort of organization. So what is the administrative class? There would Administrative class would be the function which actually does all the task. Okay, movement of papers, decision making, further to implementation, it is seen by the administration. What is the hierarchy? There's a lot of hierarchy, like a lot of division of work, kind of like lot many managers would be there, under there lots of executionists would be there. So then there are various official rules, big books are written for their working, like how the administration should function, kind of what are your thumb rules, what are the disciplines, okay, and a bit of impersonal rules also. They do look into the aspects of human beings, their relations, but more of it is that it has to move in the strict discipline and strict authority. Like nothing should be amiss. You must have seen like these DRDO offices or research offices, even educational offices are quite a bureaucratic. They don't let others to come in. So these are the ways, and official record of like their details, HR details, it's to the finish. Then their salaries are all like official record is maintained. Then like the attendance, then what is the job performance.
So their job cards are being maintained. So these are the ways. Okay, so you could give in full detail like what has Max Weber suggested. So Weber has suggested on bureaucracy. So this is the sort of approach for a management. And this is very much in function in many of the government organizations. So here he has again gone further, like these are the various aspects of efficiency. Bureaucracy does not always promote efficiency. There could be some lethargies and there could be some uh, like a goal displacement, it calls, like you're not achieving your goals. So why? Because uh, many of the relations, they do not work properly. Team is more of like a political oriented, there is infiltration, or people go against you in the sense there's not much of humanness or human approach is not there. Or like, see, there are aspects of unintended consequences which you have not thought of. So these are all an aspect of bureaucracy, because people go against you uh, like in time. It could happen like when you're in the project and you would like to achieve something, so these things could happen. So there are problems in bureaucracy, like too much of authority is there, too much of authoritative uh, disclosures are there, so this could uh, mar your way of working. This happens more of like grapevine function. So backbiting is there, like that. So let's come a bit further to neoclassical approaches. So what is the neoclassical approach? Nothing more, नए तरीके का approach है. So sorry, classical approach को एक थोड़ा सा नया तरीका दिया हुआ है, तो नियो बोलते हैं उसको. तो उसमें कौन से सिद्धांत आते हैं, कौन से अप्रोच आते हैं? तो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच है, सोशल सिस्टम अप्रोच है, डिसीजन थियरी अप्रोच है, और बिहेवियरल अप्रोच है. तो वो हम थोड़ा सा रेफर करेंगे, आपको बातचीत कर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा. तो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच जो है वो एल्टन मायो ने दिया है, और उसमें उसकी बातचीत कैसी है कि लोगों का खुद का आपस में बातचीत का तरीका कैसे होना चाहिए. मतलब वहां पर उन्होंने उसकी रिक्वायरमेंट पढ़ाई की, और उसमें उनको पता लगा कि वर्कर्स के सोशल नीड्स जो हैं वो क्या है, उनके नॉर्म्स कैसे हैं, उनके वैल्यूज का तौर तरीका क्या है, वो क्या क्या ग्रहण शक्ति करते हैं, मतलब अपने अपने तौर तरीके से क्या क्या लेके आते हैं, उनका वो इनपुट कंपनी की तरफ कैसे रहेगा. बराबर. तो और दूसरा जो है, वेदर वो इट इज अ लॉजिकल बिहेवियर और वेदर इट इज अ इलॉजिकल बिहेवियर, मतलब तौर तरीका जो है हमारे लिए अच्छा रहेगा या हमारे लिए गलत रहेगा, उस तरह से. फिर जब कभी भी वो वर्कर जो है वो एक ग्रुप में शामिल होता है, मतलब हमारी कंपनी के तौर तरीके में आता है, तो वहां पर उसका ग्रुप का इन्फ्लुएंस, हर एक बंदा जो है अलग अलग ट्रेजेक्टरी में से होगा, अलग अलग सोशल सर्किट में से होगा, अलग अलग तरह का पहनावा है, बातचीत का तौर तरीका अलग है, उसका समझ बूझ अलग है. तो वो ग्रुप में जब आता है तो वो समझ पाएगा क्या कि क्या करना है. ठीक है ना, उसको एक लॉजिक पढ़ाया हुआ है, पढ़ाई का तरीका, मतलब ही नोज व्हाट प्रोडक्ट हैज टू बी प्रोड्यूस्ड, उसको वो उसका तरीका मालूम है. लेकिन काम करा लेने का तरीका, दूसरे से बराबर बातचीत ठीक से करके वो काम कर लेने का, उसको टाइम के तरह मालूम है क्या, टाइम से काम करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, एफिशिएंटली काम करेंगे मतलब साफ सुथरा काम करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नीट रहेंगे तो अच्छा रहेगा, वक्त से काम करेंगे तो अच्छा रहेगा, तो उस तरह से. बराबर. तो वो सब चीजें जो है, उसका वो एक ग्रुप इन्फ्लुएंस बन जाता है, उसका खुद का तौर तरीके का तरीका बन जाता है. तो वहां पर एक कैसा होता है, टीम वैल्यू कैसे बनेगी, एक ग्रुप का जो काम करने का जो तरीका है, उसके सब बैड हैबिट्स छोड़ के अच्छे काम से अच्छे तरह से काम कर रहा है, तो वहां पर वो लड़ता नहीं है, आर्ग्यूमेंट करता नहीं है. तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि हर एक चीज को शांति से देखता रहेगा. कुछ काम जो है गलत हो रहा है या कुछ उसके तौर तरीके से नहीं हो रहा है, तो वहां पर वो बातचीत तो करेगा ही. तो दिस इज लीडरशिप क्वालिटीज, लाइक वेदर हाउ डू यू बिकम अ फॉर्मल लीडर, हाउ डू यू बिकम एन इनफॉर्मल. कुछ लोग जो होते हैं बोलने के तरीके से लीडर होते हैं, उनको बकायदा बनाया जाता है कि ये लीडर है. लेकिन इनफॉर्मल लीडर मतलब कैसे, चुप के, इन द सेंस ही वुड बी सेइंग एवरीथिंग फॉर अदर्स, बट वो खुद से एक्चुअली बोलने चालने के तरीके से फॉर्मल लीडर नहीं बनेगा. मतलब फॉर्मल लीडर भी उसका गुलाम है, कि अरे उसकी तरफ देखेगा, अरे भाई क्या करना है यार, मुझे बताओ जरा, मदद करो मेरी. तो इस तरह से अभी शॉप फ्लोर में सुपरविजन रहता है, तो वो लीडर के तरीके से अलग है. सुपरविजन जो काम देखता है, उसके ताक झाक करता है,
जाके लीडर को बताएगा, मैनेजर है वो लीडर, तो वहां पर क्या चल रहा है, उसके तौर तरीके में क्या चल रहा है। तो उस तरह से तो वो सब बातें जो है अब मिलजुल के किस तरह के अटक जाती है, तो कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन हैज टू बी full proof good communication. Now what he is saying is that without any conflicts, without any shortfalls, उसमें कुछ भी गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, उसमें हर एक चीज जो है वो एफिशिएंटली होनी चाहिए और इफेक्टिवली होनी चाहिए। तो वो सब कम्युनिकेशन जो है एक तो प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी का भी है और बोलचाल के तरीका भी है। ठीक है, तो इस तरह से एल्टन मायो ने एक बहुत अच्छा ह्यूमन रिलेशन अप्रोच जो है वो दिया हुआ है। बराबर। Right. Now here we go ahead further to Hawthorne's experiment. When Alton Meyer did this theory, so he worked on the work atmosphere. So here it is like checking upon like how the people are working in a closed system. Like suppose उसको लाइट नहीं दिया है, एयर कंडीशनर नहीं दिया है, और काम कुछ ज्यादा करा लिया, तो सभी तंग हो जाते हैं मतलब इस तरह से। तो दे डू नॉट डू वर्क एफिशिएंटली, then they fall ill, they show fatigue. This is how. So it is like um, from here they judged the whole situation. So it is in the Hawthorne plant where this um like work was generated, and they made the theory like इस तरह से उन्होंने उसको कंसिडरेशन दिया। अभी सोशल सिस्टम्स जो अप्रोच है वो विल्फ्रेड परेटो ने दिया है। Fine. Now, Wilfred Pareto, he said about an organization is a social system, a system of cultural relationship. Okay. So here what he is tuning to is that how does the relationship exist? Whether they should be together in a social system, whether they should be more individualistic, whether like oh, they should exist in the system, or they should be in tune with the outside system. So it is like all the things which are coming together. Fine. So they are like whether they are in tune with each other or they are falling out of it. So that was done by Wilfred Pareto. Or most of it, like in the neoclassical aspect, what were the points that need to be considered was fine. They are considering the human relation approach, behavioral approach, system approach, but how they all get generated? Finally, they are with the help of the people. Okay, and more of it was like group dynamics. मतलब हर लोग जो है ग्रुप में काम कर रहे हैं, तौर तरीका जो है वो ग्रुप से है, रिस्पॉन्सिबल है, और उसका कनेक्ट कैसा है। तो काफी कुछ चीजें जो है सोसाइटी की उसके ऊपर दबाव डालती हैं, जैसे कल्चर है, उसका सोशल एस्पेक्ट है, उसका बिहेवियर है। तो वो चीजें जो है नियो क्लासिकल थियोरी में ज्यादा जनरेट हुई है, ज्यादा समझने की कोशिश की गई है। बराबर। ओके। अभी इसमें सॉरी contributions of Bernard है। So he has written the book The Functions of the Executive. Fine. So here concept of organization, what is the concept of the organization? So more of it is system of departments, systems of incentives, system of power. This is how. And they are talking about like how does the organization flow. So nitty-gritty would be like formal and informal organization. So what two things will be together? तो फॉर्मल मतलब एक अच्छा तौर तरीका, मतलब हर एक चीजें जो है कंपार्टमेंटलाइज्ड है, हर एक चीज जो है वो ऑर्डर से रखी हुई है, हर एक चीज जो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, एक मतलब पेपर से ऑर्गेनाइज्ड है, मतलब जो भी कम्युनिकेशन है वो सिस्टम से है, ऑर्डर से है, लाइक इट इज बीइंग डन थ्रू ईमेल्स, इट इज बीइंग डन थ्रू पेपर्स। ओके। सो this is all informal organizations like mostly nahi hote, but they have understood that also, like where they are not following finally everything is in negation, like these things are not there, whatever are there agreed informal terminologies, they are not agreed in the informal, they are not existing, and simply doing what a system needs to have। तो सिस्टम में क्या तरीका है, तो डिपार्टमेंट का तरीका है। जैसे हमने कंपार्टमेंट्स की बात की है, वो डिपार्टमेंट्स की तरफ ले लीजिए। इंसेंटिव्स हैं, परफॉर्मेंस अच्छा काम किया है तो उसको इंसेंटिव दो, उसको पावर दो, उसको अपग्रेड करो। हर एक तरफ जो भी जायजा है वो किस तरह से होना चाहिए, तो
लॉजिकल थिंकिंग है. लॉजिकल थिंकिंग इज नथिंग बट साइंटिफिक थिंकिंग. ओके, वेर एवर यू कैन जस्टिफाई इट इज लॉजिकल थिंकिंग. अगर आप ऐसे सोचने लगो जैसे हम लोग काफी चीजें लाइक अनएंडेडली एक्सप्लेन करते रहते तो मैनेजर भी तंग हो जाते हैं. भाई मुझे आप ये बताओ काम क्या हुआ. ओके, जैसे मार्केटिंग के लोग बोलते हैं कि सर आज मैंने 200 चीजें जो है वो बेच के आ गया. तो फिर मार्केटिंग मैनेजर खुश है, हाँ बाबा क्वांटिफाइड है 200 चीजें जो बेच दी है. तो फिर बोलेगा पैसा कितना हुआ. पैसा से 2 लाख कम गए. अरे वाह वेरी गुड, मैं झट से उसको इंसेंटिव दे दूंगा, उसको पावर तेरे को अपग्रेड करता हूँ. तो आज से सेल्स मैनेजर बन जा. तो इस तरह से इट इज ऑल लॉजिकल एस्पेक्ट. ओके, मैनेजरियल डिसीजंस दे डू शो. Okay, so how do they show? Like your people have improved, your descriptions have become better, people are looking more happy, there are more introductions to the job profile, people are coming into the company, they are saying things for the company, they are giving a good word of mouth. This is how products are like more competitive, they are improving like that. So this is all an element of organization. तो इस तरह से so यहाँ पर हर एक चीज जो है अथॉरिटी कैसे एक्सेप्ट करते हैं, अथॉरिटी का जायजा कितना है, उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल कितना है. फिर एग्जीक्यूटिव की बातचीत करें तो हर एक चीज को उन्होंने नॉर्मलाइज किया हुआ है. मतलब हायरार्की जो आपकी फॉलो करते हैं तो उसके अंडर अंडर क्या क्या आता है. फिर वहां पर कुछ चीजें जो है बिहेवियर की बातें, मतलब काम कैसे करोगे, दे आर द बेस्ट ऑफ द मोटिवेटर्स. लोगों को उससे डायरेक्शन मिलता है क्या, दे लुक मोर ऑर्गेनाइज, और काम करने का तरीका है या नहीं. तो यस, तो उसमें एग्जीक्यूटिव का इफेक्टिवनेस कैसा है, हाउ एफिशिएंटली द एग्जीक्यूटिव इज फंक्शनिंग. सो एवरीथिंग इज बीइंग written. So this is a think tank for an organization to work in equity, work in 100. So it's called a balance of equation. Like whatever is coming in as a workforce, whatever is coming in the organization as a product, they are all in equilibrium with each other. कुछ भी ज्यादा नहीं है. मतलब input is equal to output. This is how. Okay. Okay. There is one aspect of contributions of Mary Parker Follett, which is in the year 1868-1933. So she is an aspect of the neoclassical approach only. Okay, so these all are uh, an aspect of that only. Fine. So now we go further to decision theory approach. And here what we are saying is like how should a management be done through decisions? Like how do we go further ahead in a management function? Like decision कैसे ही हर एक बातचीत जो है, अगर एक मैनेजर कुछ तो भी एग्जीक्यूशन का सोचता है तो देयर हैज टू बी सम decision to be given. Like there happens, things happen like it has not happened properly. Like this decision has not been taken properly, or things do not happen the way you want. So it means that you have not taken a decision properly. You have not strategized a particular thing properly. Okay. So this is an aspect of management decision making. So they have to make effective decisions. So to have an effective decision, what do we do? You have to learn the problem properly. आपको problem क्या है, basically कहाँ पर problem है, कौन से डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम है, कौन से एग्जीक्यूटिव के साथ प्रॉब्लम है, या कौन से सिस्टम में प्रॉब्लम है, वो सब आपको ज्यादा से ज्यादा पता होना चाहिए. तो हर टाइम जो प्रॉब्लम को डिसिफर अच्छे से करता है, तो मतलब उसको कट डाउन करता है छोटे छोटे पीसेस में, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में, और फिर उसको हर एक प्रॉब्लम को टैक्स करता है और फिर उसको समझने की कोशिश करता है. सो दिस इज कॉल्ड अ decision theory. Okay, so finally what, every problem will get analyzed at every stage and they will become uh, like solved properly, and then they will get into a better decision mode. Fine. So this is called a decision theory approach. Here we've got contributions of Herbert Simon, and he has said about the concept of the organization, like how organization should be built. Now, what are the disciplines of the concept of organization following? So this is like decision making, bounded rationality, administrative man, and the organizational communication. So under the decision making, what is he saying? वो बोल रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत कौन कौन लोग हैं,
तो हर एक मुद्दा जो है फंक्शनल मुद्दा है, जैसे मैनेजर है, उसका एग्जीक्यूशन ऑफिसर है, उसका कोऑर्डिनेशन ऑफिसर है, तो उन सबको डिसीजन मेकिंग का कभी ना कभी तरह आता ही है। ऐसे नहीं होता कि मैनेजर ही डिसीजन लेता है, पर उसके काम करने के तरीके में जो उसका एग्जीक्यूशन ऑफिसर है या उसका कोऑर्डिनेट है, उनको सबको कुछ ना कुछ तरह से डिसीजन लेना ही पड़ता है। सो एवरीवेयर देर आर डिफरेंट hierarchies, there are different controls, okay? So they get working whenever the work is functional. So that is known as decision making. अभी बाउंडेड रैशनैलिटी मतलब क्या? इट्स एन एस्पेक्ट ऑफ अगेन साइंटिफिक थिंकिंग। तौर तरीका कैसे? इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। सो रैशनल थिंकिंग करो, लॉजिकल थिंकिंग करो। सो दिस लॉजिकल थिंकिंग इज बाउंडेड इन द सेंस कि उसको एक ऐसा घेरा है, देयर इज सम लॉजिक। घेरा किसका है? तो लॉजिक थिंकिंग का है, साइंटिफिक थिंकिंग का है, रैशनल थिंकिंग का है। तो आप जब भी कभी डिसीजन मेकिंग लेंगे तो वो रैशनली थिंकिंग करिए, ठीक है? इलॉजिकल थिंकिंग मत करो। As an administrative person, बातचीत करिए, you are an administrative man. All the things are towards implementation. They have to be strategized towards implementation. खामा का अपना दिमाग को तंग कर रहे हैं कि ये करेंगे, जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग का वक्त दिया जाता है कि प्लीज थिंक ओवर, क्या प्रोडक्ट कर सकते हैं, क्या बातचीत कर सकते हैं, क्या तौर तरीका अपना सकते हैं। तो सी दैट मोस्ट ऑफ इट इज लाइक टुवर्ड्स implementation. So more of it is like an administrative way of thinking. It is all strategized, properly measured and controlled like that. तो वैसे बातचीत करिए, वैसे तौर तरीका अपनाइए उस तरह से। और सी ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, हर वक्त कौन सा कम्युनिकेशन लीजिए? तो ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। एक कंपनी है, आप ऐसे एक सोसाइटी में या नेबर से घंटों बातचीत कर रहे हैं, कुछ पता नहीं है कि आ, ये घर का ये काम रह गया है, नहीं तो पढ़ाई का ये काम रह गया। नो, दिस इज नॉट द फंक्शन। ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन में हर एक चीज, मतलब हम जैसे बोलते हैं ना, डेली प्लानर रखिए, रेगुलर रेकनर रखिए, स्केड्यूल फॉलो कीजिए, जैसे हमने अभी चार्ट फॉलो करिए। तो वक्त वक्त का तगाजा दो। तो ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन इज सो देर इज अ स्मूथ टाइम फ्लो, देर इज अ स्मूथ मोशन फ्लो, ओके, विदाउट एनी फटीग। एवरी टाइम यू आर फीलिंग एज इफ यू आर इन एन एसी, एयर कंडीशन कंपनी में ऐसे काम होना चाहिए। तो वो काम तरीका कैसे हो सकता है? तो आप अच्छे से काम को पहचानते हैं, आपको काम जो है अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, आपको उसका वक्त बताया हुआ है, आप उसको ठीक से करते हो। अगर आप उसको ठीक से करते हो तो दैट इज अ मैनेजमेंट एस्पेक्ट, इट्स योर मैनेजरल पॉइंट ऑफ व्यू। सो दिस इज हाउ। अभी एक और अपना है मैनेजमेंट थियरिस्ट, पीटर ड्रकर। सो पीटर ड्रकर इज वन ऑफ द न्यूएस्ट, ओके? So what theories he have formed is of nature of management, management functions, organization structure, management by objectives, and organizational changes. So under these few disciplines, he has put up the contributions. So हर एक कंपनी में चॉइस रहता है, मतलब हम कौन सी तरीका का मैनेजमेंट जो है फॉलो करते हैं, ठीक है? सो people do follow like Mackenzie's way of management culture. They follow Toyota's way of management culture. There is Mercedes Benz way of following culture. So what are these ways? So there are some like effective learnings from there. So what technology they follow, how they uh, manage their talent, what are their human resources, and how do they like implement the whole function? What is the way they produce so effectively? Okay, so what is, so there it is a management way, okay? So this is what nature of management is, so kind of what should be applied. तो आप एक कंपनी शुरुआत करते हैं तो वहां पर उसका तौर तरीका कैसा रहेगा, मतलब काम करने का तौर तरीका, वहां पर उसका पहनावा कैसा होगा, वहां का टेक्नोलॉजी कैसे रहेगा, वहां का प्रोसेस कैसे रहेगा। तो वो सिस्टम है एक पूरा का पूरा। तो वो जो है उसको नेचर ऑफ मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है।